Hello everyone, welcome to BYJU'S Exam Prep. I'm 𝗟𝗲𝗴𝗹 and welcome to the newspaper analysis. Good evening everyone, how are you all? So today we are going to discuss something which is extremely relevant. There are going to be a lot of controversies surrounding this bill. Right, so the government of NCT Delhi Amendment Act 2023 has finally received President's assent and it will now be an act, which means it will be a law. Right, so what is it all about is something that we are going to discuss. ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. Indian political science, democratic aspects, constitutional spirit of federalism, the status of union territories, the interference or the administration of union territories with regard to the federal scheme, the central's control over union territories, the LGs of union territories, how is Delhi different than the other union territories. ये सब कुछ relevant हो जाता है एक अकेले इस segment की वजह से. राइट, तो ये जीके के लिए तो जरूरी है ही, लीगल रीजनिंग के लिए भी ये जरूरी हो सकता है. सो लेट अस स्टार्ट एवरीवन. ओके. Now on Friday, the President has given assent to contentions government of NCT Amendment Bill 2023. It dilutes the power of Delhi government over services. What kind of services? The central services. It will come into force retrospectively from 19th May, the day when ordinance was promulgated. Right, so why was it in news? It was in news because it affects the power of the elected state government and it gives additional or it restores the powers of the Lieutenant General of the the Lieutenant Governor of Delhi, and gives him certain powers over the appointments and transfers of civil servants. Now, civil servants basically are under the control of central government all over the country, right? UPSC is a central post. But when it comes to Delhi, the appointment and the transfers and everything related to it was in the power of the elected government of Delhi. So the central government took over, promulgated an ordinance, and finally there was an act relating to it जिसको president का assent मिल गया है और अब LG के पास वापस से वही power आ गई है. Right, so पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में एक बार. ये है क्या? Everyone knows that we have launched test series. Everyone knows that we have launched the comprehensive courses for 24 and 2025. So students who are still not able to make decision, you can just download the app and unlock a free trial which is available to you for 3 days. You can watch our sessions and you can make an informed decision whether or not you should go ahead with a routine and a disciplined study under proper guidance. So what is Article 239AA? That is the entire issue of controversy. Article 239AA was inserted in the Constitution by 69th Amendment in 1991. The article provides the state of Delhi or the UT of Delhi a special status, NCT, National Capital Territory of Delhi. This article states that NCT would have Legislative Assembly, Council of Ministers headed by a Chief Minister. Now, this is not usually the case with the other union territories. They don't have a Chief Minister, but Delhi, being the capital of the country, was awarded a special status by Article 239AA, and Delhi was allowed to have a Chief Minister, a state legislative assembly, and it would function like every other ordinary state instead of functioning like an ordinary union territory. Right, so the legislative assembly would have the power to make laws on all matters just like the state legislature on the subjects that are given in the state list and the concurrent list given in the 7th schedule of the Constitution. Right, but there were 3 areas on which the Delhi legislature or the state legislature of Delhi did not have powers. 3 subjects. 3 subjects के ऊपर दिल्ली के पास legislation की power नहीं थी. और वो 3 subjects क्या हैं? That is your homework, right? The Council of Ministers shall be responsible to the Delhi
legislative assembly, the same way as any other legislature or an elected government works. बिल्कुल वही system है, majority election, forming of government, majority gaining etc. उसी का बिल्कुल same. What are the interpretations of Article 239A by the Supreme Court? Supreme Court ने इस पे बहुत इशू हुआ था, और जब ये promulgate हुआ ये ordinance तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत बवाल किया. देयर वर सेवरल डिबेट्स, बहुत सारा इशू हुआ. फाइनली इस बिल को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 239AA के रिगार्ड में बहुत सारे गाइडलाइंस या इंटरप्रिटेशंस दिए. उनमें से हम पढ़ लेते हैं मेजर. सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज एंड एडमिनिस्टर सिविल सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल. राइट, कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर है सारे उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने की जिसपे स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट उन्हें लॉज बनाने का परमिशन देता है, एक्सेप्ट 3 एरियाज. अगेन लाइक आई सेड, इट इज योर होमवर्क. कोर्ट ने एलजी की जो पावर थी ब्यूरोक्रेट्स पे, सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स पे, उसे लिमिट कर दिया. राइट, टू 3 स्पेसिफिक एरियाज. मतलब सिविल सर्विसेज में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड लॉ यहीं पे आ गया. पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड से रिलेटेड जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको एडमिनिस्टर और मॉनिटर करने की पावर एलजी के पास दी गई. राइट, और वो पावर दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दी गई. बाकी सारे के सारे एरियाज में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, और एवरीथिंग comes under the ambit of Delhi government except these 3 specific areas, and the Supreme Court also confirmed it. This was held to be the role of Lieutenant Governor. The LG's role is to either act on the aid and advice of the Council of Ministers or implement their decisions. Now, LG was also interpreted as a nominal head like every other executive head in the country, whether it is a president or a governor. So, a governor and a president cannot really act on their own discretion. They have to act in aid and advice of the Council of Ministers, whether at the parliament or at the state. So, LG was supposed to act in the similar fashion. He could not have acted in his own discretion, even though the central government has a major control in a union territory. लेकिन गवर्नर के पास इस तरह का कंट्रोल दिल्ली में नहीं था. वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस के बिना एक्ट नहीं कर सकते थे. ये कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एलजी कैन नॉट, बट मतलब this was however clarified that LG should not act in a mechanical manner and refer every decision to Council of Ministers to the President. Right, तो LG, क्योंकि obviously union territory has a little control of the central government also. Central government controls the union territories except Delhi. Delhi is not completely controlled by the central government. Right, and the issue is that they want the control over the capital region of the country. Now, the thing is that court ne clarify kiya that he cannot just be a nominal head because it is the capital of the country that we are talking about. So, whatever decision that he has to come up with in accordance with the advice of the Council of Ministers has to be conveyed to the President. He cannot just, act like a robot and do whatever the Council of Ministers is telling him to do. Then the executive power lies under the exclusive executive power of the Delhi government except for police, land and public order. Delhi government के पास control था पूरी की पूरी executive power का except in 3 areas, police, land and public order. इनके अलावा कोई भी law है, कोई भी subject है, उस पे laws को legislate और enforce, execute करने का complete power Delhi government को दिया गया. The court held that LG does not possess independent decision-making power and must act on the aid and advice of the Council of Ministers, subject to sound rationale. Even in these 3 areas, the court held that even in these 3 areas which are under the control of the executive will not be discussed, or any law concerning them will not be legislated or created except with the aid and advice of the Council of Ministers. So even in those 3 areas where the Delhi government cannot directly make laws, but they can certainly incorporate themselves in the decision making process by providing aid and advice. Then the legislative power, the court clarified that the Legislative Assembly of the Delhi has the power to make laws on the subjects in the concurrent list, all but 3 excluded subjects in the state list: police, public order and land. Right?
Concept of federalism, the court recognized that the concept of federalism applies to Delhi despite it not being accorded the status of a state. So the concept, the basic structure of the constitution, our constitution is based on federalism. We are federal in nature, which means that the power to govern is divided between center and states. Every state would have their own respective government, and the government would be responsible to create and execute laws in their own state, while the central has a control over the entire country. But it is also, it can also be enforced or exercised keeping in mind the power and the spirit of federalism. You cannot just do whatever you want. You cannot supersede or demean the state government. They are also elected representatives of the people of the state. तो आप इस चीज को demean नहीं कर सकते, insult नहीं कर सकते. You have to allow them to function in their own respective sphere. Right, what powers have been given to you under the Constitution of India is your own sphere. आप उनमें काम करिए, स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्फीयर में रहने दीजिए. इंटरफेयर तब तक मत करिए जब तक कि एब्सोल्युटली जरूरी नहीं है, और वो भी उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए करिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखा है. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द, मतलब बिल्कुल यूएस वाला सिस्टम है कि स्टेट सिसीड करके अपनी एक कंट्री भी बना सकती है. ऐसा नहीं होता इंडिया में. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, not United States. So the states cannot secede from the territory of India and declare themselves as independent. तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सबमिशन में ही रहना पड़ता है. दे ऑल्सो कैन नॉट सुपरसीड द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है इस देश में. द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इज नॉट absolute federalism but a half federalism, wherein the central government has more power, right? But the federalism still exists in a very proper sense, even if it exists in a quasi federalism manner, but वो exist करता है. Central can only interfere in a state government's machinery if there is an emergency or according to the process that the constitution lists down, not otherwise, right? अब दिल्ली यूनियन टेरिटरी में फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है वो अप्लाई नहीं होता. यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिल्ली, राइट? दिल्ली, इवन बीइंग द यूनियन टेरिटरी, इज नॉट अंडर अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द central government. It is controlled by a proper elected government, which is currently headed by 𝗟𝗏 𝗪𝗏. Now, the court in this, the case that was happening, the government of NCT Delhi वाला जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एम्फसाइज किया था कि भाई 239AA की वजह से ही दिल्ली के पास एक स्पेशल स्टेटस है, और वो स्पेशल स्टेटस अकॉर्ड होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह से वो यूनियन टेरिटरी की तरह गवर्न नहीं किए जा सकते. और एक प्रॉपर स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जो है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में एक डिविजन ऑफ पावर्स होगा, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू दिल्ली, ऑल बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज सो. It emphasized the importance of federal cooperation and acknowledged the special status of Delhi as reflected in Article 239AA and the other respective articles. Yes, sort of, Garima. Now, what is this ordinance or an amendment all about? Let's discuss this. ये जो ऑर्डिनेंस है, जो कि अब एक्ट बन गया है, it gives more power to LG. See, the ordinance seeks to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, जिसके थ्रू 239AA को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था. The ordinance aims to give the LG of Delhi more power over the administration of services in the national capital, which previously was with the government of Delhi. LG is the representative of the central government, right? He is representing the central government. Governor everywhere in the country is a representative of the central government. That's how the central government imposes or administers its control over the UT or the state,
ओके अब यहाँ पे अगर एलजी के पास ज्यादा पावर आ जाती है तो एलजी के पास अकेले के पास नहीं आ रही है पावर, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है, ठीक है। दैट इज वन कंटेंशन और अ पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। सेकेंड इज इट नलिफाइज सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। ऑर्डिनेंस में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि एलजी का जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा होगा, चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो केस में डिस्कस किया था कि चीफ मिनिस्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है दिल्ली में वो अप्लाई करता है, दिल्ली को ऑर्डिनरी यूनियन टेरिटरी की तरह डील नहीं किया जा सकता। तो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पूरी तरह से नलिफाई हो जाता है। जो क्लैरिफिकेशन और जो डिफरेंशिएशन उन्होंने एलजी और चीफ मिनिस्टर की पावर्स में दिया था, एक नॉर्मल यूटी और दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में दिया था, उसको ये ऑर्डिनेंस कंप्लीटली डिसरिगार्ड करता है। सॉरी। Then the National Capital Civil Services Authority, it is a new statutory body which is responsible for making recommendations to the LG regarding transfer, postings, vigilance and other related matters. Another power that the LG did not have. This power was held by the Delhi government. Now Delhi government does not have a power over it, the LG has power over it. Violates the principle of federalism, completely gives the LG more power than the elected government of Delhi. So central government, even when not really chosen by the people of Delhi, would still hold a significant power over administration of Delhi. Central government Delhi के लिए elected government नहीं है, क्योंकि citizens of Delhi ने उस पार्टी को as their own government choose नहीं किया है। और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू और इस नए एक्ट के थ्रू वो उन लोगों पे और उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना कंट्रोल इम्पोज करना चाहते हैं एलजी के थ्रू। अब वो खुद डायरेक्टली तो एंटर नहीं कर सकते कि भाई अब पीएम ही होगा सर्वे सर्वा या होम मिनिस्टर होंगे सर्वे सर्वा, नहीं। दे विल गिव मोर पावर टू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड इनडायरेक्टली होल्डिंग ऑल द पावर इन देयर ओन हैंड्स, राइट। तो ये पूरी तरह से गलत है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जो है, जहां पे पीपल आर गवर्न्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट दे चूज देमसेल्व्स, राइट। हमें गवर्न कौन करेगा, हमारे लिए लॉज कौन बनाएगा, उन्हें कौन एनफोर्स करेगा, ये सारा एनफोर्समेंट की तो पावर नहीं होती, लेकिन लॉज बनाने की, लेजिस्लेचर मतलब हमें गवर्न करने वाला जो कैंडिडेट होगा या जो इंसान होगा वो कौन होगा, इसे चूज करने की पावर सिटीजन्स के पास है इस देश में, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं। और ये पावर इस एक्ट के थ्रू लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस कैंडिडेट को या जिस पार्टी को उन्होंने गवर्निंग या रूलिंग पार्टी बनाया ताकि उनके स्टेट को एडमिनिस्टर किया जा सके, उससे एक बहुत ही मेजर चंक पावर का अब छीन लिया गया है इस एक्ट के थ्रू। Undemocratic, as it gives LG more power than the elected representative of the people. The ordinance tends to undermine the powers of elected government of Delhi. Again, it undermines the spirit of democracy, which is a basic structure of our constitution. I don't understand कि ये act आगे बढ़ भी कैसे कर सकता है. It is clearly violative of the basic structure of the constitution, but let's see what happens. These are the provisions of the new act that has come, or the National Capital Civil Service Authority. NCCSA consists of a Chief Minister of Delhi, the Chief Secretary, Principal Secretary of the Home Department. Decision made by this entity will be based on a majority vote, which means that the Chief Minister can be overruled by senior bureaucrats. ठीक है? If LG disagrees with the recommendations made by this entity, NCCSA have the power to return the recommendations for reconsideration. If a difference of opinion persists, the final decision will be made by the LG, effectively reversing the Supreme Court's verdict. किसी deadlock में या किसी भी तरह के clash of interest में, conflict of interest में LG का से final से होगा, और elected representative मतलब Chief Minister of Delhi किसी को पूरी तरह से overrule कर देगा.
Okay, so this is an old thing. Oh, that's it actually. यही इतना ही था और ये काफी it is not a good thing which is happening. There are multiple things that are happening. The new laws coming, the criminal codes, so completely repealing the earlier codes that we had, IPC, evidence, and CRPC, and the laws that they're bringing are more draconian than the British laws. British ने 1800s में जो laws बनाए वो draconian थे क्योंकि वो 200 साल मतलब वो 100 साल पहले बने, राइट, और भी ज्यादा 150 साल पहले बने. और आज तो 2023 में जो लॉज इन लोगों ने बनाए हैं वो उन 150 साल पुराने लॉज से ज्यादा ड्रैकोनियन और आर्केइक हैं, राइट. 377 को पूरी तरह से हटा दिया गया है, बाय द वे. मतलब हाँ, दिल्ली पीपल एग्जैक्टली उनके वोटिंग का क्या फायदा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारा कंट्रोल है. तो आप हमें वोटिंग का चॉइस दे ही क्यों मतलब दे रहे हैं. हटा दीजिए वोटिंग के सिस्टम को. आपको डिक्टेटर बनना है तो ऐसे ही बन जाइए, राइट. पीठ पीछे क्यों करना है, सब कुछ खुल के करिए. Anyhow, it's a very controversial statement that I'm making, but let's not go ahead with it. I don't want to be a target of sedition or the new section that exists, section 150. So that's it for today, guys. I seriously hope that you understand the importance of this news and the segments that have become important because of this particular segment. All the information that I discussed initially, all the topics that I discussed initially, do note them down and prepare small notes. छोटे छोटे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के नोट्स बनेंगे, उनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, उन पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच. आई शैल सी यू अगेन ऑन थर्सडे होपफुली. तब तक सब अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू.